नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। ये एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर्स के ऊपर। पैंक्रियाटिक कैंसर यानी अग्नाशय का कैंसर काफ़ी कॉमन कैंसर हो चुका है आज। बहुत से फेमस हस्तियाँ जैसे अपने डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर भी पैंक्रियाटिक कैंसर से अफेक्ट हुए थे। पैंक्रियास बेसिकली स्टमक के पीछे के हिस्से पे एक ऑर्गन है और उसका मेन फंक्शन है डाइजेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन और हार्मोनल प्रोडक्शन। डाइजेशन अपने बेसिक जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचन के लिए पैंक्रियास से काफ़ी तत्व बनते हैं। इंसुलिन जो अपने शुगर के कंट्रोल में रहता है वो बेसिकली पैंक्रियास से आता है। और फाइनली बाकी भी हार्मोन्स जो अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं काफ़ी उनमें से पैंक्रियास से ही जुड़े रहते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर यूजुअली जेनेटिक या फैमिलियल ओरिजिन से होता है। अगर आपके फादर या मदर या किसी फैमिली मेंबर को पैंक्रियाटिक कैंसर हो चुका है तो आप में भी वो कैंसर होने का रिस्क है। उसके साथ साथ एडवांस्ड एज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल के वजह से भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। डायबिटिक लोगों में भी पैंक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन, ऐसे कंडीशंस में पैंक्रियाटिक कैंसर भी पाया जा सकता है। मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटाइटिस अल्कोहलिज्म या गॉल स्टोन डिजीज यानी हमें पथरी की बीमारी उसके वजह से हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। अभी पैंक्रियास के लोकेशन के वजह से पैंक्रियाटिक कैंसर जल्दी पकड़ में आना बहुत ही कठिन हो जाता है। काफ़ी लोग एडवांस स्टेज में पकड़े जाते हैं और पैंक्रियाटिक कैंसर बाकी कैंसरों से काफ़ी रेयर है, तो इसीलिए हम लोग रूटीनली उसका स्क्रीनिंग भी नहीं करते। द बेसिक सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर इज यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। तो उसके वजह से द फर्स्ट सिम्टम इज यूजुअली द presence of jaundice or itching of skin or yellow color of eyes or dark colored urine। तो ऐसे symptoms basically secondary to blockage of the pancreatic and bile duct की वजह से हो जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी pain in abdomen, passes of blood in your motions और weight loss, loss of appetite, ये सब symptoms के वजह भी पैंक्रियाटिक कैंसर रह सकता है। अभी हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। यूजुअली कोई भी कैंसर के डायग्नोसिस में दो चीज़ करना जरूरी है। वन इज कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस एंड सेकेंड इज स्टेजिंग ऑफ द डिजीज। फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस the usual step is in the form of a biopsy। अभी ये depends on the location of the pancreatic cancer। If the cancer is located more near the head of the pancreas, then the way to do a diagnostic biopsy is by endoscopy followed by either ERCP or EUS, endoscopic ultrasound। Using these techniques, a needle is passed and a biopsy is taken। Another method of doing biopsy in cases of tumors which are located more far away is basically in the form of CT or USG guided needle biopsy। In such situations, the basic thing is getting confirmation of the diagnosis and then proceeding further. Along with biopsy, the next step is basically staging of the disease। Now that is done in the form of imaging, in the form of a whole body PET CT scan। Some centers also do a CECT scan, pancreatic protocol, which is a special type of CT scan which specially focuses on the pancreas। Along with that, you need to do a CT scan of the chest or the thorax to ensure there are no metastases to the lungs। Once you get a proper diagnosis and a biopsy, adjunctive tests are also needed। Usually these tests are tests such as your bilirubin levels, serum protein levels and various liver function tests। This is because अगर आपका bile duct या pancreatic duct block हो जाता है, the liver is also affected secondary to this and jaundice is also seen। Hence these tests help in detecting the degree of jaundice or liver dysfunction। An important test that is done here is a tumor marker which is known as CA
19/9. This is a prognostic indicator which shows कि आपका कैंसर कितना हद तक बढ़ चुका है और कितना फैल चुका है. Higher the value, more dangerous the disease. Now let us talk on the treatment of pancreatic cancer. Unfortunately, pancreatic cancer is only treatable in the earlier stages. The moment it spreads to stage 3 or stage 4, cure in pancreatic cancer is next to impossible. Early stages, that is stage 1 and stage 2, is treated mainly and only by surgery. There are two types of pancreatic cancer surgeries, those for the head and those for the tail and distal regions. For the head, the surgery of choice is known as Whipple's surgery or pancreaticoduodenectomy. In that, we remove the head of the pancreas, the duodenum, the distal part of the stomach, little bit of the jejunum, along with the gallbladder and bile duct. After removing all this, we also clear the surrounding fat and lymph nodes. And then we reconstruct that entire system using a gastrojejunostomy, a jejunojejunostomy, a pancreaticojejunostomy, and an hepaticojejunostomy, which is an anastomosis of the hepatic duct with the jejunum. This maintains continuity and the person can eat. Lesions which are located distal part of the pancreas or the tail region, the usual surgery is known as a distal pancreatectomy. Sometimes with that we have to remove the spleen as well, when the surgery is known as a distal pancreatectomy with splenectomy. This is the treatment of choice. Radiation has not proven to be useful in pancreatic cancers. Along with that, even chemotherapy has limited usage in pancreatic cancers. Immunotherapy and targeted therapies are slowly coming into pancreatic cancer treatments. But the only treatment which has shown definitive results is surgery. After treatment, people are kept on an intensive observation where for the first year on a monthly basis they have to visit their doctor. Follow-up is usually done up to 5 years, following which the protocols are relaxed as we can presume that the patient might be cured of his disease. So this was in all a basic outline of pancreatic cancer and its treatments. We hope that this will be beneficial to someone, and anyone having any doubts can connect with me through this channel.